Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the series of international law. This is a continuation part of the mentioned series. In this lecture, we will study about the sources of international law. I'll basically give you the meaning and definition of the word sources, that what does the word sources mean in terms of international law, and we are going to discuss the sources one by one, which are of immense importance regarding drawing out the a verdict of any case in the given situation. So we'll begin with the introduction, and then we are going to discuss the sources one by one, and then we are going to draw the conclusion in the end. So we'll begin. I'm really sorry for the background disturbance and noise. Sorry for that inconvenience, so bear with me. Okay, so sources of international law. In the previous lecture, I have discussed the definition of international law. That what international law is, it is basically the law that is governing the relationship between two states and agencies, or in absolute sense, we can say that the members of international community, which basically includes the agencies, political actors, international organizations, and the relations among states. So it's a broad horizon which covers every member of the international community, whatever comes into the sphere. So international law governs the relationship of sovereign states, international organizations, and individuals within the international community. As I have said this before, the sources जो है ना, they are very much diverse, and they are bifurcated into primary and secondary. And primary sources are given the importance of the foundation of international law. They are known to be the foundation of international law, while secondary sources have their importance as supportive element to the primary. So primary sources हम उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि they are the first priority of international law, और जो secondary है they add their importance to the primary sources. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि what is sources, so the material sources of international law may be defined as the actual material from which the international lawyer determines the rule which can be applicable to the given situation. वो चीज़ें जिनसे अगर एक lawyer है वो conclusions draw out करता है, verdict draw out करता है in the given circumstances. So we can say that these are the sources of international law. तो अगर हम in specific terms अगर हम देखें इसको, तो the term source refers to the method or procedure by which international law is created. So I think this is very much clear. What does the term sources of international law mean, and we are going to study that one by one. However, if I tell you that sources of international law are classified into following categories, like such as custom, treaties, yeah, general principles of law, yeah, they are also the decision of the judicial or tribunals, or decisions of the international institutions. So these are the sources of international law. The first one which we have as a primary source of international law is the treaties and agreement. अब जो ट्रीटी होती है या एग्रीमेंट होती है, और द कवेनेंट बेसिकली, ये जो है ना दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एंड दे साइन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेपर पे जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं एंड बोथ द स्टेट्स साइन दैट, सो इट बिकम्स अ treaty or an agreement between the two sovereign states. So treaties and agreement are the primary source of international law, and it is an agreement between the two or more states, and it is governed by the international law. अच्छा, these are also the binding commitments for the signatory parties. क्या मतलब signatory parties? वो sovereign states जो उस चीज़ को साइन करते हैं, तो they become the signatory parties. और ये एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में. इट इज़ लीगली बाइंडिंग अपॉन द ऑन द सॉवरेन स्टेट्स इंटरनेशनली, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री में देखें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट एग्जांपल, तो हमारे पास ट्रीटी की आती है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ एंड जेनीवा कन्वेंशंस. अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. अब क्या मतलब कस्टमरी? वो प्रैक्टिसेस जो कि मतलब जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, या प्रैक्टिसेस दैट आर बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड,
ठीक है, तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स एज बाइंडिंग। ठीक है, लीगली बाइंडिंग होते हैं या ये एक फ्रॉम ओवर द टाइम पीरियड ये एक डेवलप होते हैं। स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन था वो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो कि बाद में कस्टमरी एक लॉ बन जाता है। और ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की भी एक बिल्कुल लीगल मीनिंग होती है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ लीगल मीनिंग। और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है ना, इट फ्रीक्वेंटली गवर्न्स ऑन द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इशू ऑफ फोर्स ट्रेड एंड इट among other things as well। ठीक है, तो इन चीज़ों से डील करता है सच एज ह्यूमन राइट्स, और ये ट्रेड के साथ डील करता है, द यूज़ ऑफ फोर्स के साथ, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना, टेरिटरी का, कुछ ऐसे जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज़ द बेसिकली द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड दे आर ऑल्सो लीगली बाइंडिंग अपॉन द sovereign states। Okay, on number 3 we have the general principles of law. So these are also the essential components of international law as a source, but these are also legal systems of every country, including international law. Whether international legal framework or the general principles of law, these apply to all the settlement of disputes. Interpretation of treaties and legal reasoning are the essential part of the general principles of law। ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एवरी कंट्री। इन कंट्री के रूल्स के अंदर जो जैसे नेशनल लॉज होते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं विद इन द स्टेट, and also focuses on the interstate relation among the sovereign states के जो relations होते हैं ना among, तो these are also the sources of international law। On number 4 we have the judicial decisions and teachings। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि the decisions of the judges या eminent jurists जो होते हैं और scholars, their decisions on particular issues or situations or in the time of conflict, these are also the sources of international law and they play a significant part in making the sources of international law। लेकिन दूसरा जगह पे ये भी कहा जाता है कि these decisions are not legally binding, लेकिन they can basically provide a legal guidance or essential guidance to the states or the international organizations। तो ये decisions होते हैं jurist के और judges के, they provide their suggestions and advices in times of conflict or in times of issues। ठीक है, and they are the significant sources of international law। However, the point to remember is that they are not legally binding, they just provide an essential guidance to states, sovereign states, right? Okay, so on number 5 we have yes cogens or peremptory norms। These are the principles or the set of norms, and these are the binding and compelling principles that are binding on all the states, and इसको किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता इन वाले नॉर्म्स पे या प्रिंसिपल्स पे, एंड दे कैन नॉट बी अल्टर्ड थ्रू ट्रीटी, एग्रीमेंट, कस्टम्स, किसी भी तरीके पे ये इन लॉज का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, इसकी यस कॉजेंस की एग्जांपल जो है वी हैव लाइक प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, स्लेवरी और पायरेसी। ऐसे लॉज जो हैं कोई स्टेट इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी है तो मतलब वो हर स्टेट में है। ठीक है, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सच लॉज जो कि स्लेवरी को प्रमोट करे। ठीक है, सो दे आर अगेंस्ट दिस लॉज, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की भी हो सकती है। तो अब कि कोई भी कंट्री जो है ह्यूमन राइट्स को मतलब उनके लॉज में होता है, वेदर इट्स म्यूनसिपल लॉ और द इंटरनेशनल लॉ, के मतलब वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। बट वी एग्री टू द टर्म दैट देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसी तरह अगर प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी है तो मतलब अगर वो प्रोहिबिट तो करते हैं लेकिन इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग। In the end, we can conclude that these sources play an integral role in the development of international law, और इसका जो collective impact है that is basically part of in the evolution of the international laws structure and nature।
क्योंकि इस जितने भी जो रूल्स प्रिंसिपल्स जुडिशियल डिसीजंस और कस्टमरी लॉज एंड ट्रीटीज़ एंड कस्टम्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, दीज आर ऑल्सो followed by the international organizations, और ये आजकल भी रिफ़्लेक्ट होती हैं। और जितना सिक्योर इंटरनेशनल ग्लोबल एरिना है, मतलब इसके लॉज को फॉलो किया जाता है, तो दिस इज़ द साइन दैट इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी is more efficient. So this marks the end of this lecture series. I hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I'll be coming up with more international law series, and we'll cover this subject as whole in other videos. Till then, take care. Bye.